यमुनादिनदेभ्यो नमः। ॐ यमुनादिनदेभ्यो नमः। ॐ सरस्वत्यै नमः। हस्तौ प्रक्षाल्य ऋषिकेशाय नमः। गोविन्दाय नमः। आसनशोधने विनियोगः। ॐ पृथिवी त्वया धृतः लोका देवी त्वं विष्णुराधिता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु दासन। भूर्भुवः स्वः भौम्यै नमः। भाले स्वस्ति तिलकाम्। ॐ स्वस्ति इन्द्रो वृद्धशरावाः स्वस्ति नः पूषा वृषभावेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यावहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनो व्यात्तं ईश्वरन्निधानम् ईखान सर्वलोकम् ईखान दीपप्रज्वाल्य। ॐ चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखः अग्निरजायत। अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा ज्योतिर्ज्योतिः सोऽर्चः स्वाहा। अग्निर्वर्चोज्योतिर्वर्चः स्वाहा सोऽर्चोज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ज्योतिः सोऽर्चः सोऽर्चोज्योतिः स्वाहा। हस्ते पुष्पाण्यादाय प्रार्थयेत्। दिव्यराज्यसेव्यमान पावनाङ्घ्रिपङ्कजं व्यालयाज्यसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदाधियोगवृन्दवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। अवन्तिकापुराधिनाथ क्षेत्रपालं भजे। बम 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 बटुकाय नमः। रक्षादीपस्तदेवताभ्यो नमः। अनन्तकोटि नमस्कारान् समर्पयामि। हस्तौ प्रक्षाल्य हस्ते गन्धाक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा गणपतिं ध्यात्वा आनो भद्रादेवैदिकमङ्गलमन्त्राणि स्मरेयुः। पूर्वकाङ्गयाः प्रधाने जवानाः गर्थिबन्धना। ॐ भद्रां कर्णेभिः शृणुयामदेव भद्रां पश्येमाक्षभिर्जाजपराः। हिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्गोचस्तानो मधियारेरिफतायुर्गन्थोः आदेतयो नादेतेरन्धरिक्षमादेतर्माता सपिता सपुत्रः ऋषवे देवा आदितेः पञ्चजना आदिर्जातमादिर्जानितवम् स्वारसपातायाः शान्तिर्विषवे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधे जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं गुरु शन्नः गुरुप्रजाभ्यो भयन्नः असुभ्यः विश्वानि देवसा वेदत्तुरेतानि पराशोभा यद्भद्रां तन्ना
सुवा सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु सिद्ध श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। इत नमस्कृत्य वामहस्ते अक्षतान् गृहीत्वा ओम श्रीमन्महागणाधिपतये ओम लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। ओम उमामहेश्वराभ्यां ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां ओम सतीपुरन्दाभ्यां ओम माता पितृचरणकमलेभ्यो ओम इष्टदेवताभ्यो ओम कुलदेवताभ्यो ओम ग्रामदेवताभ्यो ओम स्थानदेवताभ्यो ओम वासुदेवताभ्यो सर्वेभ्यो देवेभ्यो सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो सर्वेभ्यो गुरुभ्यो सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। इत नमस्कृत्य सुमुखाय नमः। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरस्य विकटो विनायकः ओमनकेतरगणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः। द्वादशैतानि नामानि यापठे शृणुयादपे विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अभीप्सिस्साधुसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरे नारायणि नमोऽस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीप्रेतेभ्यो स्मरामि। लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः येषामिण्डिवरिष्यामो हृदयस्थो जनार्दनः। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीदेवोर्भूते ध्रुवानेतिर्मतिर्मम। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यः। स्मृते सकलकल्याणां भाजनं यत्र जायते पुरुषं तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरे। सर्वेष्वारम्भकार्येषु त्रयस्त्रीभुवनेश्वर देवादुषन्तुरासिद्धे ब्रह्मेदान जनार्दन। विश्वेशं माधवं दृण्डें दण्डपाणिं च भैरवा वन्दे काशीं गुहाङ्गङ्गा भवानी मणिकर्णिका। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सिद्ध श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। कर्मपात्रपूजन ओम तपमाजामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्त्रे दधमानो हेरमानो वरुणे हवोद्युरुषको समान आयुः प्रमुखी। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरे जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। कर्मपात्रं सुसम्पन्नं पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनसा धिया पुनन्तु कृष्णा भूतानि याथवेदः पुनीहि मा। भुवनभास्कर अर्घ्यः हिरण्यजेन सविता रथेन देवो दाति भुवनानि पश्यन्। एहि सूर्यसहस्रार्घ्यं मम प्रार्थयेत्। आपने पुष्प लेके भगवान सूर्य नारायण से हाथ जोड़ के प्रणाम करिए। Hare Almaya Vapar Yata Saha
नमस्कारान् समर्पयामि सङ्कल्पमादाय सङ्कल्पवाक्यं स्मरेयुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोऽन्हि द्वितीयपरार्धे श्री श्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे जम्बूद्वीपे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यावर्तैकदेशान्तर्गत ब्रह्मावर्तैकदेशे पुण्यक्षेत्रे पुण्यप्रदेशे इन्द्रप्रस्थक्षेत्रान्तर्गते यमुनायाः उत्तरे दिग्भागे देहल्यां प्रदेशान्तर्गते भारती विद्याभवन नाम्नि स्थानस्थिते कस्तूरबा गांधी मार्गे बौद्धावतारे प्रभवादि षष्टि संवत्सराणां मध्ये कालयुक्त नाम्नि संवत्सरे श्री सूर्ये उत्तरायणे शिशिर ऋतौ मासानां मासोत्तमे मासे पुण्यपवित्र मासे माघ मासे शुभे कृष्ण पक्षे षष्ठ्यां शुभ महापुण्यतिथौ हस्तनाम्नि नक्षत्रे सुकर्मा योगे वाणिज्यकरणे चंद्रवासरान्वितायाम् अमुक अमुक गोत्रोत्पन्नोऽहम् अमुक अमुक शर्मा वर्मा गुप्तोऽहम् नाम सपरिवारोऽहं सकुटुम्बोऽहं श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त पुण्यफल प्राप्त्यर्थम् अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थं प्राप्त लक्ष्म्याः चिरकाल संरक्षणार्थं सकल मन ईप्सित कामना संसिद्ध्यर्थं सकल दुरितोपशमनार्थं मम सबान्धवस्य सभार्यस्य सपुत्रस्य अखिल कुटुंब सहितस्य सपशोः समस्त भय व्याधि जरा पीडा मृत्यु परिहार द्वारा आयु आरोग्य अभिवृद्ध्यर्थं मम जन्म राशेः सकाशाद्ये केचिद विरुद्ध चतुर्थ अष्टम द्वादश स्थान स्थित क्रूरग्रहाः तैः संसूचितं संसूचयिष्यमाणं यत् सर्वारिष्टं तद्विनाशद्वारा एकादश स्थान स्थितवत् शुभफलप्राप्त्यर्थं सूर्यादि नवग्रह देवताः सानुकूलता प्राप्त्यर्थं इंद्रादि दश दिक्पाल देवता प्रसन्नार्थं पुत्र पौत्रादि संतते अभिच्छिन्नाभिवृद्ध्यर्थं कायिक वाचिक मानसिक सांसर्गिक ज्ञात अज्ञात सर्वविध दोष निवृत्ति पूर्वकम आधिदैविक आधिभौतिक आध्यात्मिक त्रिविध ताप उपशमनार्थं धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धि द्वारा ग्रहकृत राजकृत सर्वविध पीड़ा निवृत्ति पूर्वकम परिवार वर्गे मित्र वर्गे समाजे गृहे वा सदैव मधुर संबंध स्थापनार्थं शरीरेषु जायमान जनिष्यमान आदि व्याधि रोगादि संपूर्ण विनाश पूर्वकम दीर्घायुः नैरुज्य प्राप्त्यर्थं व्यवसाय क्षेत्रे कार्यक्षेत्रे आगतानां सर्वेषां बाधानां निवृत्ति पूर्वकं व्यापारेषु उत्तरोत्तर वृद्धि प्राप्त्यर्थं गृहे सुख शांति समृद्ध्यर्थं परमंत्र परय
परपीडा परकृत्य परप्रयोग विशेष वास्तु पूजन पंचांग पीठ स्थित देवतानां पूजनम तत्पश्चात भूमि पूजनम संपूर्ण फल प्राप्त्यर्थम हवनम कर्म करिष्यामहे। रथो दूरमुदैति दैवन्दनो सुप्तस्या भैवैति दोरङ्गमल् ज्योतिखल् ज्योतिरेखल् तन्नमेमानः शिवसङ्कल्पमस्त सङ्कल्पसिद्धिरस्तु सङ्कल्पसिद्धिरस्तु सिद्धिरस्तु सङ्कल्पः। आदौ दिगरक्षणाम् वामहस्ते गौरीसरसपाणि गृहीत्वा दक्षिणहस्तेन अर्चयेत्। ॐ रक्षोहणं बलगहनं वैष्णवे मोदमहन्तं बलगमुद्गिर निजं मे नृत्यो धममत्यो निजखाने धमहन्तं बलगमुद्गिर निजं मे समानो धमसमानो निजखाने धमहन्तं बलगमुद्गिर निजं मे सबल धुर्जम सबल धर निजखाने धमहन्तं बलगमुद्गिर निजं मे सजातो धम सजातो निजखानोत्कृत्याङ्गिरामे। अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विघ्नकर्तारस्तेन स्यन्तु शिवाज्ञया। अपक्रामन्त भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशां सर्वेषामपि रोधेन पूजा कर्म समारभेत्। ॐ पूर्वे रक्षतु वाराः आग्नेयां गरुडध्वजः दक्षिणे पद्मनाभस्त नैऋत्यां मधुसूदन पश्चिमे चैव गोविन्द वायव्यां तु जनार्दन उत्तरे श्रीपति रक्षेत् ऐशान्यां तु महेश्वर रक्षतु धात्र अधो अनन्त रक्षत एवं दशदिशो रक्षेत् वासुदेवो जनार्दन वामपादेन भूमिं त्रिवारं ताडयेत् हस्तौ प्रक्षाल्य पूजना। हे प्रियागणत्वा प्रियपतिगो हवामहे निधिपतिगो हवामहे तपसो मम आहमग्नानि गर्भधमत्वा वदासि गर्भधं मा अम्बे अम्बिकें फालिके सुभद्रिकां काञ्चीरवासिनीं साम्बिकाभ्यां नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि सकलपूजनार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। पुनः हस्ते पुष्पाण्यादाय वरुणदेवता ध्यान। पुनः हाथ में पुष्प लेके भगवान वरुण का ध्यान करिए। जो ॐ तत्वाजामि ब्रह्मणा बन्धमानस्तदा शास्ते जजमानो हरिभिः अहेनमानो वरुणे हवध्युर्सक्तमान आयुः प्रमाणि। अस्मिन् वरुणं पूजयामि श्रेष्ठते लक्ष्मीश्च पदनावहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्रारेणो श्रीनाव्यात्तम् ईश्वरन्निहानामं महिखानसफलोकं महिखान ग्रह ऊर्जाहुतयोऽभ्यन्तं विप्रायमतिं रेखां विषुप्रियाणां भोहमिखमुज्जगो समग्रभमुपयामगृहीतो सिद्धरायुतमानुष्ठं गरह्णाम्ये खते दो निरिन्दरायुतमानुष्ठानम्। सूर्यादि नवग्रहेभ्यो नमः सहित कुलदेवी देवताभ्यो नमः। ध्यायामि पूजयामि ध्यानार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। प्रतिष्ठापना। ॐ मानो ज्योतिर्जुभातास्यामि हतवादिर्जयामि मन्त्रोत्तवारिष्टं यज्ञो सामे मन्त्रभात शिवे देवास इहमादम्। आसनार्थे अक्षतान् समर्पयामि। ॐ पाद्योः पाद्यं जलं समर्पयामि हस्तयोः वर्गं जलं समर्पयामि। मुखे आचमनीयं जलं समर्पयामि। सर्वाङ्गे स्नानीयं जलं समर्पयामि। निरितपञ्चामृतस्नानाम्। ॐ पञ्चनद्याः सारस्वती मापयन्ति सुस्रोतसः
सरस्वते तो पंचधासो देशे भवत्सारिका उच्च मे सुनिता च मे पयश्च मे रसश्च मे वेदं च मे मधु च मे शक्तिश्च मे सावेतिश्च मे प्रेमिश्च मे वृष्टिश्च मे चैत्रं च औद्भ्यं च मे ध्रिये नागलमन्तां शुद्धोदकसनानां शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो हरिवारस्ताश्विनाः श्वेताः श्वेताक्षोरुणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णाजामा अवलिप्ता रुद्रानभो रूपाः पाठन्याः वस्त्रार्थे रक्तशोत्रां सदजातो ज्योति भासः शर्मपारोधमासा स्वाहा वासो अग्ने विश्वायो भग्नो संग्राय समग्रिभावासो यज्ञोपवेतां परमां पवित्रां प्रजापतेय ॐ ब्रह्मदत्यानां प्रथमं पुरस्ताद्विषे मतः सुरुचो भेन आवह सबुधन्या उपः अस्य विश्वाः सातश्च देव सातश्च विवाह यज्ञोपवीतं समर्पयामि यज्ञोपवीतान् आचमनीयं जलं समर्पयामि उपवासत्रार्थे रक्तसूत्रं समर्पयामि गन्धं निलेपयामि त्वं गन्धर्वा आहारस्त्वामिन्द्रसभा बृहस्पतिः त्वामोखते सोमो राजा विद्वान् यक्षमानामुच्यते श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठः चन्दनं प्रतिगृह्यताम् अलङ्करणार्थानक्षताः ॐ अक्षन्नमे मदन्तु च प्रियः अधोखत स्तोखं समानव विप्राणविष्टायामधीचो झानीन्द्रदे हरि ओषधेः प्रतिमो गृहं कुमारेः प्रसोभरेः प्रसवाय संवरिर्विरुधः पारयुभः पाण्डवकाण्डप्ररोहन्ते परभः परभुतपरे एवानो दुर्गे प्रदनुसहस्रेण शतेन नमो बिल्मिने च भवतिने च नमो वर्मिणे च परोमिने च नमः श्रुताय श्रुतसेनाय च नमो दुर्दुभ्याय च हरण्याय च ओहिरिमभोगैः पृच्छेति बाहुञ्जाय हेतिं परिवाधमानः हस्तकविश्वाभयुनान् विद्वान् भुवान् भुवाग्गोसं परिवान् विश्वनाः इन्दोरिव प्राध्वरे सुघना सुभागप्रामियः पतयन्ति जिह्वाः हिरस्यधारा अर्भार्पाये काष्ठाभिर्दन्धोर्निभिः इन्द्रभाः त्र्यम्बकं जयामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् हृदयार्मुखे नमं हृदाः त्र्यम्बकं जयामहे सुगन्धिं प्रतिवेदनम् उर्वारुकमिव बन्धनाधिको मुखी यमामुदाः विकेतवर्चेतवाक्वायं सदेवो वः सविता प्रार्थयन् श्रेष्ठतम जगन्मनाम्यायुधमग्न्या इन्द्राय भागं प्रजापतिरनमीव अर्क्ष्मा पुस्तेन ईशतमाघसग्गोसोऽध्रुवा अस्मिन् वो भवस्य तमद्विर्जनास्य धोन्पाहे ॐ धोरसे धोर्ध्वधोर्ध्वन् जोसमान् धोर्ध्वदिन् धोर्ध्वयं भयं धोर्ध्वामः देवानामसिद्धेनामग्गोसुरेनामं अप्रिकामं दुष्करामं देवभूतमं वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धाढ्यो गन्धमुत्तमः अमरे सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् धूपमाग्रापयामि प्रत्यक्षदीपं सन्दर्शयामि हस्तौ प्रक्षाल्य नैवेद्यं निवेदयामि योः समावर्तः अदुघातो वृद्धिशः श्रोतरात्तथा लोकात् आकल्पय
निक्षिप्य ग्रासमुद्रामगे कृत्य मत्समुद्रात् साध्य येन मुद्रयां सुखे कृत्य ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम ज्ञानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा आत्मनीयं जलं समर्पयामि करोतु वर्तनार्थे चन्दनानुलेपनम् ओम अग्गोषो नामे अग्गोषः प्रजानां परोहा परोः अन्तस्ते सोममवतु मदाय रसो अच्युतः करोतु वर्तनार्थे चन्दनानुलेपनं समर्पयामि ऋतुफलम् ओम जाः फलिनी च अफला अवगमाजः अवगमेः बृहस्पति प्रासूदास्तानो मुञ्चन्तवग्गो हसः इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतस्तव तेन मे शुभभावाप्तिर्भवेज्जन्मनि जन्मनि ऋतुद्भवानि अमृतशानि नानाविधानि पक्वानि मधुराणि फलानि समर्पयामि सफलतां तूलपीठिका ओम चतुर्भुजे हविषा देवादधियामा धन्वता वसन्तोऽस्यासीदाज्यं क्रीडमाः शरद्भवेः ओतसमास्विद्रावस्तूनन्यः पर्णन्नवेरनुवादप्रागृह्णीनः शेनस्येव धराजालो अङ्कासं पारिणाधिकराप्राः सहोर्जातारित्रमाः स्वाहा हिरण्यवै द्रव्यदक्षिणा हिरण्यगर्भः समावर्तमाग्रे भूतस्य जातः पतिरेख आसीत् सदाधारपृथिवीन्द्रिया भूते माङ्गस्मै देवायः विधेमः कृतायाः पूजायाः साधुपुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि कर्पूरनीराजनाम् गोहवेः प्रजननं मे अस्तु दशभिः सर्वकालकुसुमस्थाने आगमसानि प्राजासानि मासोसानि लोकासन्यभयसानि नमः प्रजां बहुलां मे भारतवन्नं वायोरेतो समासोदत्ता रात्रिमाधिवक्रो राजः विदुर्प्राणिहाभिः इवासलाकोसे बृहभिः विदुषसहातवेहं प्रतवे नमः कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं स्वामसन्तोषदयालविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि शीतलीकरणं पुष्पै देवताभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं परमात्माभिवन्दनं दर्शनं जाग्रहणं हस्तौ प्रक्षाल्य मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ओम् यज्ञेन द्वितीयमय जन्तदेवः स्थाने धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनागं महिमाः तदन्तयत्र पूर्वे ताभ्याः सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसय्यसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय नमहे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वर वै श्रवणोदधाम नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ताभ्यां परमेश्वर वैदिकमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि दक्षिणायां पदे पदे हस्ते विशेषार्घ्यः ॐ नमोद्गणेभ्यो गणपतिभ्यः नमो 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 भ्रातेभ्यो भ्रातृभ्यः नमो नमो ऋषेभ्यो समादिभ्यः नमो नमो प्रियोभ्यो विश्वारोभ्यः नमो नमः ॐ रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष चन्द्रयो गणक्षः भट्टानामभयङ्करः रामा भगवान् वैमातृभासिन्धो समातृप्रभा वरदस्तं वरं देहि वाञ्छितं वाञ्छितामया महेन सत्सफलार्घेण फलवोऽस्तु सदा मम गङ्गणपतये नमः विघ्नहन्त्रे नमः विशेषार्घ्यं समर्पयामि प्रार्थयेत् हस्ते पुष्पाण्यम्बोधराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतिराज्यविभूषिताय गौरीसुताय गणनाधरमो नमस्ते या श्री स्वयं सुकृतिना
विश्वविनोदिनि नन्दिनुते गिरिवरविन्दशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते बोल भगवति हे सिद्धिकण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते रम्यकपर्दिनि शैलसुते समापादकी नास्ति महाभीमसमानहि एवं ज्ञात्वा महादेवी योग्यं तथा कुरु अनन्तकोटि नमस्कारान् समर्पयामि सर्वेभ्यो दिग्देवताभ्यो नमः हस्ते जलमादाय अर्पणम् दर्शकराय नमः इन्द्राय नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव शम्भो विप्राणाम् अर्चनाम् गौब्राह्मण्याय जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः विप्राप्रसादात् धरणे धरोहम् विप्राप्रसादात् कमलावरोहम् विप्राप्रसादादिकादिकोहम् विप्राप्रसादात् मम राम नाम नमो ब्रह्मण्यदेवाय गौब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो करतले वेणोतले सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपास्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालजोत्तमज्ञे पूर्णा झण्डो मनोरथाः प्रेमपूज्य भगवान् की जय। देविनो भवत्करानिवेशने सत्सानाः सर्वप्रदाः भूर्भुवस्व पृथिव्यै नमः ध्यायामि पूजयामि ध्यानार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि पूजनम् पाद्योः पाद्यं हस्तयोः वरकं मुखे आत्मनीयं सर्वाङ्गे स्नानीयं जलः सर्वसुष्ठः नो मणिवास आश्विनाः शेताः शेताक्षो रुणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णाधामा अवलिप्ता रुद्राघभो रूपाः पार्जन्याः सकलपूजनार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि पृथिव्यै नमः अमृतरूपेण निवेद्यं निवेदयामि ॐ नाभ्य आसेदन्तरिक्षको शेषणोद्योः समवर्ततां सत्रात्तथा लोकान् अकल्पयन्ना अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणबन्धवे ज्ञानवैराग्यसिद्ध्यर्थ भिक्षां देहि च पार्वते भूर्भुवस्वः त्वां गन्धर्व अखनौस्तवामिन्द्रसमा बृहस्पतिः भावो भजे सोमो राजा विद्वान् यक्षमादामुदीयाता अक्षर्णमे मदन्तस्य प्रिया अधोघदा अस्तो भास्वमानवो विपरानाभिष्ठाय मादी जो जान्विन्द्रते हरि ॐ इखेतवर्जेतवपाय स्तदेवो महासवेनार्पयातु श्रेष्ठतम याकर्मण आप्याय होमज्ञा इन्द्राय भागं प्रजावते अनमेव आयुष्मावस्तेन ईशनामा कसक्कसध्वरवास्मिन् गोपादौ स्यात् वीर्यधमानस्य पाशोन् पाहि
पुष्प दे दिए, सभी लोग हाथ जोड़ के प्रणाम करिए। हाथ जोड़कर सभी लोग प्रणाम करें। हर हर महादेव हस्ते जलमादाय नेनकटेन पूजनाख्येन कर्मा भूमि देवी प्रियमां नमः। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो आएंगे तभी अब यज्ञ प्रभायामसे बृहच्छादाय
अग्नये नमः अग्निध्यान। आपने पुष्प देकर विधियों का ध्यान कराइए। ओम अग्नि प्रज्वलितं वन्दे जातवेदं हुतासनं दण्डवर्णवर्णं समृद्धं विश्वतोमुखम् अग्नये नमः अनन्तकोटि नमस्कारान् समर्पयामि। ओम गणपतये ओम गणपतये ओम गणपतये ओम अम्बे अम्बिके बालिके नमः नैतिकसनातनदुर्गहारिवरिका गम्भीरवासने माम्बिकायै मालिकायै माये ओमायामि ब्रह्मणा वन्दमान सदा हस्तेन्द्रमानो हविभिः अहे नमः परणे हवधनुषकोन्नमाः प्रभो महापदे वरुणाय 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 देव सविता दुरितानि परासुवा आसुवा पंचहोंकारेभ्य श्रियैः लक्ष्मी बुद्धे के लिए वो सोफे के लिए 2 आदमी ओम जय गणेश देवा माता लक्ष्मी पार्वती पिता महादेवा एकदंत दयावंत चार भुजाधारे मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी जय गणेश देवा जय गणेश देवा माता लक्ष्मी पार्वती पिता
जय शीतलीकरणं पुष्पै देवताभिवन्दनं आत्माभिवन्दनं परमात्माभिवन्दनं दर्शनं जागरणं हस्तो प्रक्षालय Today we have gathered here at Bharti Vidya Bhavan, New Delhi for the foundation laying ceremony of the Nandalal Nuwa Center of Indology. This momentous occasion becomes even more special as we are graced by the presence of Honorable Vice President of India, Shri Jagdeep Dhankar, and the Second Lady of the country, Dr. Shrimati Sudesh Dhankar, spouse of Honorable Vice President. सभी लोगों से निवेदन है कि कृपया अपने मोबाइल स्विच ऑफ या साइलेंट मोड पर करें और किसी प्रकार की फोटो या वीडियो ना बनाएं। वाइस प्रेसिडेंट जी का कैबिनेट एनी टाइम अब भारतीय विद्या भवन के प्रांगण में पहुंचेगा। And Dr. Shrimati Sudesh Dhankar ji to the presence of Bharti Vidya Bhavan, New Delhi. Our esteemed guests are being received and escorted by Shri Banwari Lalji Purohit for the ceremonial sapling plantation by the Vice President of India. The sapling plantation beautifully symbolizes the growth, sustainability and which is the center of authority Bharti Vidya Bhavan aims to propagate. We thank Honorable Vice President and Dr. Shrimati Sudesh Dhankar for leading this meaningful initiative. Honorable Vice President Shri Jagdeep Dhankar and Shrimati Sudesh Dhankar are now performing the foundation laying ceremony for the Nandalal Nuwa Center of Indology, marking a historic moment in the journey of Bharti Vidya Bhavan, New Delhi. Brahma
तस्यै स्वाहा ब्रह्मन् ब्रह्मणो ब्रह्मवर्चसे जायतामहाराष्ट्रे राजन्यः सोल एकपियो दिव्याधि महारथो जायतान्तोधि पर्जन्यो भागो भारावत्यो न ओघभायाः पश्यन्ताञ्जो दक्षेमोराः कल्पादाम्मा श्रीर्भरचस्वमायुष्यमारोग्यमाविधात् महीयते धनं धान्यं पशुं भवभित्तराभं सपसंवत्सरं दीर्घायुः ओम मेधां मे वरुणो ददातु मेधामनिः प्रजापतिः मेधामिन्द्रशुभायुष मेधां ददातु मे स्वाहा दीर्घाशीर्वादः ओम समुद्रवत्सने देवी पर्वतस्तन्मण्डले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादसपरजक्षमस्व मे भूम्यै नमः अनन्तकोटिनमस्कारान् समर्पयामि कर्पूरनीराजनम् ज्वालामालिके नमः हविः प्रजानं मे सुदशरीको धर्मकार्यो समस्तानि आत्मक्षानि प्रजासानि पशुसानि लोकासानि भयसानि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोतु वर्णं भयोरेको असमासुधता हस्तौ प्रक्षाल्य नानासुगन्धिपुष्पाणि भवानि च पुष्पाणि निर्मया दत्ता परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि रक्षसूत्रं विधान Following the foundation laying ceremony, the Honorable Vice President Shri Jagdeep Dhankar and Dr. Srimati Sudesh Dhankar are proceeding towards the dais. Esteemed guests are requested to kindly stand in respect of Honorable Vice and Dr. Srimati Sudesh Dhankar. The Honorable Vice President of India, Shri Jagdeep Dhankar, Dr. Srimati Sudesh Dhankar, spouse of Honorable Vice President of India, Shri Banwari Lalji Purohit,
Vice President and Trustee Bharti Vidya Bhavan and Chairman Bhavans Delhi Kendra, Shri Satyanarayan Nuwal, Chairman Solar Industries India Limited, Shri Jagdish Lakhani, Executive Secretary and Director General Bhartiya Vidya Bhavan, Shri C.S. Vaidyanathan, Vice Chairman Bhartiya Vidya Bhavan, Delhi Kendra, Professor Shashi Bala, Dean Bhavans Nandlal Nuwal Center of Indology, and all the dignitaries present today. भारतीय विद्या भवन के संस्थापक कुलपति के.एम. मुंशी जी ने भारतीय विद्यालयों का संरक्षण एवं भारतीय विद्या के प्रचार प्रसार हेतु स्थापना की थी, ताकि आने वाली पीढ़ी इनसे दूर ना हो जाए। एक तपोनिष्ठ देशभक्त के रूप में वे ज्ञान मार्ग के माध्यम से देश की सेवा कर रहे थे। उन्हीं के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलते हुए भवन दिल्ली केंद्र में भारतीय विद्याओं के अध्ययन, अनुसंधान एवं प्रकाशन आदि कार्य करने के लिए केंद्र की स्थापना की थी। उनके लिए यह भूमि खरीदे हुए 25 वर्ष से अधिक हो गए हैं। समय के अनेक उतार चढ़ावों के बाद आज हम एक पड़ाव पर पहुंचे हैं कि हमें एक आर्थिक आधार श्री सत्यनारायण नुवाल के माध्यम से मिला है। संपूर्ण भवन परिवार के लिए एक हर्ष का विषय है कि अब इस जमीन पर एक भव्य इमारत का भव्य भवन का निर्माण होगा, जहां पर सभी प्रकार की भारतीय विद्याओं की सेवा करी जाएगी। I now request Shri Banwari Lalji Purohit to felicitate Honorable Vice President of India, Shri Jagdeep Dhankar, and Shrimati Sudesh Dhankar with a shawl, coconut, and bouquet. अब लग रहा है क्या फ़ायदा होता है, भी लेगा फिर यूपी के टीम से हूँ ऑलरेडी, फिर हम समझाते हैं चलता नहीं है और कोई चैनल में तो समझाते हैं। Dr. Shashi Bala is now requested to felicitate Vice President with a silver coin and a memento to Dr. Shrimati Sudesh Dhankar. I request Shri Purohit ji to felicitate Shri Satyanarayan Nuwal ji with a shawl, coconut, and a bouquet. Dr. Shashi Bala is requested to felicitate Shri Nuwal ji with a memento. I
I now invite Shri Banwari Lalji Purohit, Chairman Delhi Kendra, to deliver welcome address. परम आदरणीय राष्ट्रपति जी, मंच पर उपस्थित उनके साथ हैं उनकी सैदन श्रीमती धनकर जी, हमारे भारतीय विद्या भवन वर्ल्ड वाइड डायरेक्टर जनरल एंड जनरल सेक्रेटरी श्री लाखानी जी, मुंबई से इसी प्रोग्राम के लिए खास निमंत्रित थे, और अपने दिल्ली केंद्र के लोकप्रिय वाइस चेयरमैन वैद्यनाथन जी, शशि एंडोलॉजी डिपार्टमेंट की डीन शशिवाला जी, और सबसे जिनका वजह से ये कार्यक्रम संभव हो सका, ऐसे हमारे नागपुर के ही सत्यनारायण जी नुवाल, उन्होंने दिल खोलकर हमारी बात मानी और भवन को उन्होंने दान दिया है। बातचीत ऐसे हुई, हम कल्पना नहीं करते। बातचीत ऐसे हुई कि एंडोलॉजी सेंटर जिसमें ये डिपार्टमेंट आने हैं, ऐसा हमें करना है, पर पैसे का प्रॉब्लम है, ऐसा मेरे मुंह से निकल गया। कितने का हमने कहा 65 करोड़ रुपए लगेंगे, एस्टिमेट हमारा 14 करोड़ तो हमको बॉम्बे ने प्रॉमिस किया है, और 51 करोड़ कम पड़ रहा है। 1 मिनट नहीं लगाई, बोले आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, आप दे आई होगी। मैं समझा, बाकायदा याद रखा। फिर बोले वो उसका चेक वगैरह कुछ बनाना है क्या? मैंने कहा नाउ मैटर्स। कितनी खुशी की बात है, ऐसे राजस्थान के हैं, ऐसे भामाशाह हमको मिले हैं, जो कि एक बहुत बड़ा काम है। और खुशी मुझे निमंत्रण लेके माननीय उपराष्ट्रपति जी के पास गए। उपराष्ट्रपति जी को बताया, भारतीय विद्या भवन में आ चुके हैं, जानते थे, परंतु इंडोलॉजी सेंटर उसमें इतने विभाग होंगे। उन्होंने कहा कि इसमें जरूर आऊँगा। आज हमारी विनती को मान देकर आज हमारे बीच गरिमा बढ़ी है। भारतीय विद्या भवन 1938 में के.एम. मुंशी जी द्वारा स्थापित 1938। सिर्फ 5 लोग मिले थे। शिक्षा पद्धति मैकाले की, उसको पलटना है। हमारा युवा वर्ग डिस्को ट्विस्ट वगैरह ये उल्टे सीधे धंधे में जा रहा है, हमारी संस्कृति पर आघात हो रहा है, खत्म किया जा रहा है, तय किया हो। और दृढ़ निश्चय के साथ में उन्होंने संस्था शुरू की। मैंने नहीं किया है, 25,000 रुपये पाँचों ने मिलकर डोनेशन। और आज भारतीय विद्या भवन की 110 केंद्र है, फॉरेन में 10, टोटल 120 केंद्र।
मिडिल ईस्ट के अंदर में 5 स्कूलें हैं। न्यूयॉर्क में केंद्र है, लंदन में केंद्र है, और इंडिया में तो आप जानते हैं पूरा फैला हुआ है इंडिया में। इतना एक विशाल रूप लिया हुआ, सभी का डेडिकेशन, आप सबका प्रेम भारतीय विद्या भवन राष्ट्र की निर्मिति में एक अपना छोटा मोटा योगदान देते हुए आगे बढ़ रहा है। ये हम लोगों के लिए एक आनंद और हमें उत्साह मिलता है। माननीय उपराष्ट्रपति देश के सर्वोच्च स्थान पर बैठे हुए जब इनका ब्लेसिंग संस्था को मिलता है तो सफल। ये जो आज माननीय उपराष्ट्रपति जी के हाथ से तो सुंदर जो भवन आप देख रहे हैं, आर्किटेक्ट जिन्होंने डिजाइन किया, बहुत मन से किया है, उनको भी मैं अभिनंदन करता हूँ। बहुत अच्छा उनको बोल दिया, वन ऑफ द बेस्ट कॉन्ट्रैक्टर जो कंट्री में होंगे, ऐसे 5 कॉन्ट्रैक्टर सिलेक्टेड मैंने नाम दिए हैं, उनमें से ही हमको चाहिए। कोई छोटा मोटा परफेक्ट काम टाइम पे हो एंड क्वालिटी हो, इस बात का ध्यान रखा जाएगा। इस बात का हम बोला जाए। और ये वास्तु जो दिख रही है, इसमें डिपार्टमेंट कितने आए हैं? इंडोलॉजी में संस्कृत, योग, आयुर्वेद, वास्तु, ज्योतिष, गणित, पुरोहित, जैन, बौद्ध, हिंदू दर्शन, सभी प्रकार के शास्त्रीय कलाएं, भाषा शास्त्र, लिपि विज्ञान, सभी विषय। आज भी हमारे प्रॉब्लम ऐसा है, एस्ट्रोलॉजी की क्लास में हमारे पास में रजिस्टर्ड यहाँ पर 600, ऑनलाइन 3000, परंतु 2 ही दिन क्लास ले सकते थे, संडे और सैटरडे। भवन नहीं था, जगह कम पड़ रही थी, बाकी में कॉलेज चल रहा था। तो हमारे बीच में बड़ा दिल लेकर कुमार जी ने दिल बड़ा दिखाया, उसको प्रायोरिटी समझी, तो उन्होंने योगदान दिया। साल भर में कर देंगे, मेरे ख्याल से आर्किटेक्ट यहाँ हैं, विदिन ईयर विल कंप्लीट। और आज तो ब्लेसिंग मिल गया हमको मान परम आदरणीय उपराष्ट्रपति। बहुत मन से आज उपराष्ट्रपति जी के हाथ से तो जोड़े से पूजा की है, काम सफल होना है। लिखे हुए गांधी जी के रस्तों पर ये स्थापित हुआ था, उसी समय ब्लेसिंग गांधी जी का मिला था, सरदार वल्लभ भाई पटेल का मिला था भारतीय विद्या भवन। एक चीज़ और बोलूँगा, 5 मिनट में जरूर लूँगा, पर मैं मुंशी जी का जो सबसे बड़ा सोमनाथ का जीर्णोद्धार, वो जो काम हुआ मुंशी जी के हाथों से, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मुंशी जी दोनों ने पहले से तय करके रखा था। जैसे ही देश स्वतंत्र हुआ पहला काम किया, गांधी जी के पास गए दोनों, सरदार वल्लभ भाई पटेल और के मुंशी जी, कहा कि हमको जीर्णोद्धार करना है, इसकी परमिशन दीजिए। उन्होंने कहा परमिशन है गांधी जी, तो सरकारी पैसा नहीं है, जनता का पैसा लेके आपको करना है, क्योंकि जनता के पैसे से उसका इतना बड़ा जीर्णोद्धार। और जब प्राण प्रतिष्ठा का समय आया, राजेंद्र बाबू के पास दोनों गए थे। राजेंद्र बाबू ने कहा था कि मैं आऊँगा, प्राण प्रतिष्ठा मेरे हाथ से होगी, दो राय ने उन्होंने एक्सेप्ट किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल का अंतकाल बीच में आया, हो गया, पूरा वर्डन के मुंशी जी पे आया। वहाँ पर जब पंडितों ने, जैसे आज विधि विधान से पूजा हुआ, मैं तो तारीफ करूँगा उपराष्ट्रपति जी की, बहुत संयम से और विधि विधान से जैसा पंडितों ने कहा उस हिसाब से पूजा साजते हुए पूरी विधि विधान से पूजा की है। मतलब भारत की संस्कृति के प्रति एक तरह की नज़रों से हमने देखा है, आज हमने वो अनुभव किया हम सब लोगों ने। तो इनका उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा जब हुई तब सभी शंकराचार्य और पंडित थे, आदेश हुआ कि विश्व की जितने भी पवित्र नदियां हैं उन देशों से उनका जल बुलाया जाए प्राण प्रतिष्ठा के समय।
अभिषेक के लिए। कोई प्रॉब्लम नहीं था, केंद्रीय मंत्री थे मुंशी जी, सभी एम्बेसी को लिख दी चिट्ठी, आने लग गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे उस समय, एक एम्बेसडर ने उनको लिख दिया चिट्ठी पंडित जवाहरलाल नेहरू को कि मुंशी जी का आदेश है पवित्र नदी का जल भेजना, भेज तो देंगे पर ये खर्चा कौन से अकाउंट में डेबिट करें। उन्होंने कहा, तो पंडित जी को मालूम पड़ा कि के मुंशी जी क्या कर रहे हैं। बुलाया, क्यों मुंशी जी? बोले आप ये मत करिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति जी के हाथ से होने वाला है। जवाहरलाल जी ने राष्ट्रपति जी को चिट्ठी लिखी कि आप मत आइए, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के आप राष्ट्रपति हैं, आपने नहीं जाना चाहिए मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में। राजेंद्र बाबू ने कहा, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ ये नहीं है, मैं जरूर जाऊंगा, प्राण प्रतिष्ठा मैं करूंगा, परंतु यदि और कोई दूसरे धर्म वाला भी बुलाएगा तो वहां भी जाऊंगा। धर्मनिरपेक्षता का ये है। ये राजेंद्र ऑथेंटिक रिकॉर्ड में ये जो बात मैं बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। महान व्यक्ति का बनाया हुआ। अब हम लोग सब, हमारी जिम्मेदारी, मैं तो आपसे आह्वान करता हूँ, हमको पूर्ण विश्वास है, हमेशा मिलते रहा है। उपराष्ट्रपति जी का ब्लेसिंग इस संस्था को, इनका वरद हाथ रखने के बाद में हम ऊंचाइयों पर पहुँचेंगे। फैकल्टी बहुत बढ़िया है, मैं तो तारीफ करूँगा। मेरे पास में बैठी हैं शशि बालाजी। शशि बालाजी ने सेम अथॉरिटी है अपने कंट्री में, हैं। ये इस तरह के हीरे भारतीय विद्या भवन में ढूंढ ढूंढ के रखे गए हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है उनके नेतृत्व में ये काम बहुत आगे है। और हम अश्योर करते हैं डेडिकेशन के साथ, तो हम टोटल ट्रांसपेरेंसी भारतीय विद्याओं को आगे प्रचार प्रसार कोई कमी नहीं रखेगा। दिल्ली केंद्र की जिम्मेदारी अभी कुछ ही दिनों पहले मिली है, 3 महीने ही हुए हैं, काफ़ी समझ लिया हूँ। और एक सुनहरा मौका उपराष्ट्रपति जी के से आशीर्वाद से भवन को मिला है, इसका भी हम पूरा लाभ उठाएंगे। नई भवन बनेगा, नया कार्यक्रम चलेगा। और ये विश्वास रखिए, ध्रुव तारा जिस तरह से चमकता है ना, उसी तरह से ये एंडोलॉजी सेंटर चमकेगा पूरे विश्व को। मैं हृदय से आप सबका स्वागत करता हूँ और खासकर माननीय उपराष्ट्रपति जी और खासकर श्रीमती जी। गरिमा आ गई आपकी उपस्थिति से, बहुत फर्क पड़ता है। आपके आने से बहुत आनंदित महसूस है। और शास्त्रों में बहुत बड़ा महत्व है, आप दोनों के हाथ से पूजा होना शास्त्र में बहुत बड़ा महत्व है। इसका पुण्य मिला है, इसका लाभ भारतीय विद्या भवन को मिलेगा। आपका बहुत प्रेमल स्वागत है। इसी तरह से आपका प्रेम बना रहे और सभी हम लोग आज इस दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ें। भारतीय विद्या भवन टोटल ट्रांसपेरेंसी के साथ, भारतीय विद्या भवन जो के.एम. मुंशी जी का, सरदार वल्लभ भाई पटेल का सपना है, उसको हम पूरा करके रहेंगे। और चाहे कुछ भी हो, बरसों हम पूरा निरंतर उस काम में लगेंगे। भवन पूरा डेडिकेटेड है, सभी पूरी शानदार टीम है, बहुत अच्छा काम कर रही है। उन सबको भी इस उपलब्धि के लिए, इस अवसर पर जिन्होंने इतनी मेहनत किया है, उन सबको मैं शशि बाला जी के नेतृत्व की पूरी टीम, उनको मैं हृदय से बधाई देता हूँ। और मेरे पुनः उपराष्ट्रपति जी से यही आग्रह करूँगा कि यही प्रेम आपका बना रहे और भवन पर इसी तरह से आपका वरद आशीर्वाद हमेशा मिलता रहेगा। इस अपेक्षा के साथ पुनः आपका स्वागत करते हुए शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। As I am told to announce, now it is time for us to gratefully receive the donation worth 51 crores from our esteemed donor, Shri Satyanarayan Nuwalji, for the upcoming building, which will be named after his father's name, Shri Nandalal Nuwal.
I request Shri Jagdish Lakhani ji, Executive Secretary and Director General Bharati Vidya Bhavan, to please receive it on behalf of Bharati Vidya Bhavan. Thank you so much, sir. May I now request Honorable Vice President of India, Shri Jagdeep Dhankar ji, to address the gathering, please. लगा दो। परम आदरणीय श्री बनवारी लाल पुरोहित जी, मैं समझता हूँ नाम ही काफ़ी है और कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। The tiger is roaring still in mid-80s like a young man. आपने जो मेरे बारे में कहा है, there can be many caveats, but I take his sentiments, blessings. These will motivate me, inspire me to engage in my activity, keeping the nation and its culture always in mind. His association with number of institutions is remarkable for his dedication, his commitment, selfless service. It has been my good fortune to be at such institutions, including Bharati Vidya Bhavan and institutions in Nagpur. I was overwhelmed by this success story. मेरे मन में कोई शंका नहीं है, बहुत ही कम समय में यह शानदार भवन मूर्त रूप ले लेगा। What is so remarkable is that the building is in sync with the ethos of Bharati Vidya Bhavan. My congratulations to Sri Satyanarayan Malji, Chairman Solar Industries India Limited. People do donate, people do serve social cause by their funds, but such kind of contribution is special. एक बात से मैं असहमत हूँ पुरोहित जी से। इनको लगा कि बात हो गई, आपके सामने कोई बात हो नहीं रही, वो करना पड़ता है। Behind your smile, there is iron man. आपने जो आज बात की सोमनाथ मंदिर के बारे में जो ऐतिहासिक विवरण दिया है, वो आज के दिन हर भारतीय को याद रखना होगा। हर भारतीय का दिल छू गया है। एक वो कालखंड था जहाँ राष्ट्रपति को ऐसा निर्देश दिया गया जिसका हमारी संस्कृति में कोई स्थान नहीं था। सेक्युलर शब्द की व्याख्या करने के लिए इंडोलॉजी में गोता लगाना पड़ता है। इसके लिए विदेशी पढ़ाई काम नहीं आती। आई नॉट अगेंस्ट फॉरेन एजुकेशन,
ऐसा नेक काम इस प्रांगण में हो रहा है, ये आप और हम सबके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये दिल्ली में हो रहा है और इसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता दिल्ली में है। उन लोगों के लिए है जो ज़्यादा दिल्ली में वास करते हैं, शासन प्रशासन के ऊपर उनका कड़ा प्रभाव है। So congratulations Satyanarayana for taking this great step, and I am so happy that the institution that will do it will be one of the best in the country. It will come up soon. Shri Jagdish Lakhani, Executive Secretary, Director General भारतीय विद्या भवन, और जैसा पुरोहित जी ने कहा एट अ ग्लोबल लेवल, आपके कंधों पर तो बहुत भार है, पर आपको थामने के लिए भी बहुत लोग हैं। कंटिन्यू एंड कीप ऑन काउंटिंग, many more events have to come. Shri C.S. Vaidyanathan, a good friend of mine, a very distinguished senior advocate, always stood for ethics and did not have one thing which his peers may possess. He had thoroughly distanced himself from arrogance. A remarkably humble man. He is becoming Vice Chairman of Bharatiya Vidya Bhavan, Delhi, Kerala. Would get many people inspired with his inclusive thought and connected to Bharatiya Vidya Bhavan also because he is an outstanding legal luminary of the country. Professor Shashi Bala, Dean Bhavan's Nandlal Nuwal Center of Indology. I had the occasion to receive the Honorable Lady at Rashtrapati Niwas. Oh my God. She was encyclopedic, passionate, mission, every second, bringing out facts one after the other. I relieved her of all the posters she had brought to Rashtrapati Niwas, because each of them was telling a great incident, event, story. She heading it would be, it will be incremental in price. I must recognize the presence of an illustration of the soul, whom I have had the occasion to see in action as Army Commander in Kolkata, and the country saw him as Chief of Army Staff, Shri Manoj Pandey, General Manoj Pandey. I find his presence and connect here very soothing. There are many, I wouldn't take names, everyone here is very special to all of us. But since I have had the occasion to see him in action as Governor, State of West Bengal, hats off to his efficiency, his commitment, and his belief in our nation. Esteemed guests, I never thought in my life I will be so honored to lay the foundation stone of an institution connected with Bharatiya Vidya Bhavan, and that would be with respect to Indology, Nandlal Nuwal Center for Indology. This will take us a long way. It is befitting occasion, and this has already been availed by Purohitji, to pay out tributes to Bharatiya Vidya Bhavan and its visionary founder, Dr. K.M. Munshi, in preserving, promoting Indian culture and knowledge systems. It was not easy. People were carried away by Western ideas. Foreign education was taken synonymous with wisdom and knowledge.
He had mistaken souls around. In that environment, he visualized a thought process which now has blossomed into an institution of international prominence. In 1938, imagine the contemporary scenario then. There were headwinds, difficult terrain, no takers, and the initiative was taken. Truly, as visualized by the great man and his colleagues, the institution has been a pioneering institution and a beacon in the field of education, culture, and arts. Dr. Munshi Ji, as a statesman, writer, and freedom fighter, dedicated himself to reviving India's unparalleled heritage and culture. Somnath is one instance. He uniquely merged Indic traditions with modernity, defending heritage while others in governance favored Western ideologies. I am sure the then Prime Minister must have got a taste of commitment of Dr. Munshi when his thought process was grounded by presence of the then first President of India, Rajendra Prasad, at Somnath Temple. Bharatiya Vidya Bhavan's efforts in promoting classical languages, publishing ancient texts, and fostering a sense of pride in India's heritage have been seminally instrumental in nurturing the spirit of Indology and keeping it alive. Friends, distinguished audience, time now to ensure our heritage thrives and blossoms. There couldn't be a more opportune time. Distinguished audience, this day is much beyond just laying the foundation stone of Nandalal Nuwal Center for Indology. In a sense, it is seeding of a transformative journey to rediscover, reassert, reinvigorate the profound intellectual and cultural heritage that has defined India for millennia. For over 5,000 years, we have worked on a mechanism the world is now recognizing. Let us be aware of it. While millions soothingly worship, defy, and take pride in such initiatives, there is a minuscule category that seeks to defy and denigrate it. Our passion for our culture, its heritage must ever inflame us with mission and zeal to continually nurture this unique wealth found only in Bharat. This center, friends, heralds transformation to rediscover India's millennial legacy. Despite minimal opposition, when a civilization rediscovers its roots through indigenous lens, it doesn't just survive, it illuminates the world's future. We as a nation are destined to contribute to world peace and harmony. This nation stands uniquely for well-being of all, encapsulated in Vasudhaiva Kutumbakam. This groundbreaking ceremony shows our resolve and our supreme resolve to preserve knowledge in texts and traditions. Indology is timeless wisdom expands with deeper meanings bearing contemporary relevance. It will take me hours to reflect on it. Much of the problems we are facing today would get resolution, and the resolution will be fast-tracked once we keep Indology in mind. This addresses fundamental questions about existence. Environment, hazard is one. Ethics, look at the lowering of standards.
Governance, it has to be people-centric. Health, it has to be universal. And environment, we don't have another planet to cohabit. All of us are aware. Distinguished audience, it is wholesome. India is now on way to reclaiming its brilliance, drawing from Odantapuri, Takshila, Vikramshila, Sompura, Nalanda, Vallabhi, and many more. Time has come for us to revisit our thoughts, rededicate ourselves. Let us inflame that aura now by having such institutions dotting various parts of our country. This center is one such step in that direction. I beseech our youth to take pride in India's mathematical contributions. Zero, algebra, geometry, and trigonometry. When we reflect on our wealth, gold mine, Charak Samhita, Sushruta Samhita inspire holistic healthcare and sustainable living. Our Atharvaveda is encyclopedic when it comes to our health concerns. Vedanta, Buddhism, Jainism showcase India's inclusive philosophical traditions. What a travesty. The ignorant are trying to make us aware about inclusivity by their narrow-minded approach. The philosophical schools of Vedanta, Buddhism, Jainism and others have always encouraged dialogue and coexistence, principles that hold immense value in today's polarized world. Indology decolonizes all of us, as seen in repressing. And I was part of the system. I am part of the system. We unshackled ourselves from colonial legacy, colonial mindset, when we traversed from Dandavidhan to Nyayavidhan. It was a small, but the message was large. The budget of this country now is declared to the country at 11 a.m., not at the time suited to others. Our history's first draft came through colonizers' distorted perspective. Thousands had contributed to the freedom movement. They made supreme sacrifice. But when history was scripted, dotted by perversion, prejudice, only to promote few, and this was allowed to take roots after independence. Distinguished audience, you are aware, no country in the world has risen by studying and interpreting history and tradition written by others. I feel deeply anguished to admit that the first draft of our history was written by colonizers who had very perverse lens of seeing India's texts and traditions. Their one motto was to keep our celebrated figures who laid their lives, made supreme sacrifice, away from historical mention. Colonial rule imposed an external framework on our education system. And not only that, contemptuously they dismissed indigenous traditions as unscientific and irrelevant. It was their mental gap, myopic thought. They couldn't appreciate the depth of knowledge and science and rationality in our process. This not only alienated Indians from intellectual roots, but also disrupted the organic evolution of knowledge system that has flourished for millennia. Thousands of years of hard work, gold mines of knowledge and wisdom were sidelined
we are at that phase of history after independence. If I may say so, no civilization in the world has been so stressed, subjected to severe extreme stress and distortions, myths, and outright lies and untruths as ours. This is a tragedy and travesty of unimaginable proportions. An attempt was made to undo 5,000 years of evolution of India's collective consciousness. Such like centers would now be nerve centers, epicenters of a positive change. Post-independence, after a small period of national history, we again got a bunch of Indologists and historians who use the European social theories to read and understand India's past. As a student, when I wanted to go through history, one author cropped up. Late in my evening, I know what was being fed was not good for the nation, was not good for my intellectual absorption. But such authors I don't want to name were celebrated, they were accoladed, they were applauded. Some of them were promoted to subserve views and not their academic expertise. And they were so far distanced from our classical languages, Sanskrit, Prakrit, and 9 others, which we have so far declared, 11 in number. Their sinister effort, pernicious design, was lent wings by the aid from the West. Ivy institutions also. They produced sepoys that were not working for us and claimed to represent us. They would reiterate only colonial superiority, colonial frameworks, not realizing organic, pristine, substantial depth of our knowledge. And therefore, when people say there are snakes in Ganga, I believe our civilization needs indigenous lens to understand itself, as much as a child needs mother's milk. We need to absolve ourselves from the original sin of outsourcing history. This center is one such step. True decolonization begins when we stop being footnotes in others' narrative and become authors of our renaissance. We were reduced to just footnotes. The resurrection of our heritage begins with integrating classical texts like Bhagavad Gita and Arthashastra into mainstream education. Why not? Imagine the worth of these scriptures, their texts, the enlightenment you get by just reading. Understanding will make you get into a different sublime mode. A renaissance of our culture requires renewed focus on our classical languages, and fortunately that number is now 11. Government recognition of classical languages marks an important step as a way forward stance. This additional emphasis on India's ancient languages and its literature will revive not only the languages, but also revive the dormant in us and open our gateways to the past. Establishing Indology chairs worldwide helps promote proper understanding of Indian heritage. I have no doubt this center, with the kind of infrastructure it will have, the kind of dedicated human resource it has, will be performing game-changing work. It's a momentous occasion from that perspective.
a new milestone that will create an edifice we are looking forward to. A nation after more than 3 decades and getting thousands of inputs could evolve national education policy in 2022. There you will find integration of Indian knowledge system, and that's a watershed moment in our educational scenario. Distinguished audience, nurturing this movement requires responsibility beyond governmental frameworks. Let's not look to the government for it. Each individual is capable to make a contribution. So I urge the youth of the country, I urge you to embrace your heritage with pride and curiosity. Take pride because not many countries in the world can claim the kind of culture and heritage we have. Learn the classical languages, explore ancient texts, and use technology to make this knowledge accessible to a global audience. And our youth is quite competent and capable to take up this challenge. Once they make a beginning, they will thoroughly get involved emotively and otherwise. Let us create digital libraries, translate texts, and develop platforms where traditional wisdom can interact with modern ideas. As a matter of fact, every modern idea can be read into an idea that existed in our scriptures. Remember, I am addressing the youth. You are not merely inheritors of this legacy, not only torchbearers. You have to work to further nurture it and blossom it. To researchers and academics, I encourage you to adopt a multidisciplinary approach to your studies. The richness of Indian knowledge lies in its interconnectedness. We are not a country in isolation. We take the whole world as one. G20 established it. One earth, one family, one future. The richness of Indian knowledge lies in interconnectedness, welfare of all. For example, yoga. The Prime Minister made a clarion call at United Nations in the shortest time. Largest number of countries converged to adopt it. And now it is helping people worldwide. Our Arthashastra offer insights into governance, economics, and diplomacy that remain relevant today. If the people are aware of governance, if the people are vigilant, trust me, the ecosystem will so evolve that those in authority will automatically get influenced. It is awareness of the people that gives democracy its real life. But if the people are not aware and are prepared to be governed only, then governance will be of a different kind. But you will have governance of the kind you want and desire and are entitled to only when you are fully exposed to our ancient mechanism of what governance stands for. Distinguished audience, democratic polity thrives on discourse. Expression and discourse are fundamental to democracy. If you do not have right of expression, you cannot claim to be living in a democracy. But your expression is incomplete unless you believe in dialogue. Because when you have the dialogue, there may be the other point of view. A point of view that may not be for your taste. But sometimes, and I would say more often than not, a dialogue enriches you. A dialogue affords you an opportunity to be humble, not to be self-judgmental, not to believe in a concept, I alone am right. The very concept that an individual can think, I am right, he distances himself from sublimity and essence of human society. Because no one has the right to judge
that I am alone right. That judgment has to be left to the discretion of the masses. Therefore, I urge the nectar of democracy is consideration of the varying points of view. Civilizationally, we have been inclusive only for that process. Absence of dialogue, and by dialogue I mean a dialogue where there is no fear, a dialogue where there is freedom, a dialogue where the dialogue will not invite ridicule, a dialogue which will find consideration and not rejection at the top of a head. If that dialogue is absent, it will be death knell for at least democratic institutions. A peep into our Indology will reveal that dialogue and discourse were always favorite when it came to resolution of issues. I would say the only way, and history will prove it right, there have been conflagrations, there have been wars. Ultimately, the resolution was through dialogue and discourse. The absence of dialogue can be apocalyptic, can be very dangerous, can cliffhanger society if dialogue is not there. And this concept emerges from our scriptures, Vedas, Puranas, and look at even our epics, Ramayana, Mahabharata, and Gita, all indicate predominance of dialogue. There has to be, for every person in the country, unqualified belief in nationalism and the spirit to work in togetherness for the nation. Distinguished audience, some forces that are inimical to the nation provide recipe for chaos, absolute chaos. They are in ever readiness to destabilize our nation, run down its growth, taint its institutions, tarnish the image of its great personalities. Such forces have to be neutralized and negated and decimated. And that can be done only when the concept of Indology gets widely spread out. Distinguished audience, we are at a time when we are marching into the last quarter of the century of our independence. And therefore we will have to rededicate ourselves with vigor, fervor, passion and mission to ensure that sublime principles of Indology take us to a developed nation at 2047. And I have no doubt, friends, subscribing to these principles of dialogue, discussion, expression would also run down the political temperature in the country, which at the moment is very severe. Efforts need to be made by one and all concerned to ensure that dialogue takes place at all levels in democracy. A healthy dialogue and discourse will always go for the nation's welfare. I have no doubt that this center will come into existence and fully operational sooner than we think. Sa Vidya ya Vimukte, knowledge alone liberates. दिक्कत क्या है? कुछ लोगों को ये बात समझ में नहीं आती। समय आ गया है कि जो रास्ता भूल गए हैं उनके बात समझ में आ जाए। Knowledge alone is our savior, and knowledge of Indology हमारे लिए बहुत सुखद अनुभव होगा, देश के लिए बहुत अच्छा रहेगा। Our collective resolve matches this monumental task of cultural revival.
मैं एक बार फिर पुरोहित जी को आदरपूर्वक साधुवाद का पात्र मानता हूँ। तो कामना करता हूँ कि मैं अपने जीवन में जो इन्होंने किया है उसका अंश भी कर पाऊंगा तो मेरे को सुखद अनुभव होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Thank you so much, sir, for your blessings. Bhavans is blessed today to receive blessings from none other than the Vice President of India, Shri Jagdeep Dhankhar. We are grateful, sir. Ladies and gentlemen, please rise for the national. स्टॉप कर दीजिए बीच में। हो गया ना।